क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है? आप डिसीजंस कैसे लेते हैं और पुरानी बातें, इवेंट्स और डिटेल्स कैसे याद रहती हैं? Why is it that we sometimes forget some things and remember only the things that we want to remember? Do we really have a choice in deciding what to remember and what not to? Welcome to the world of cognitive psychology. आज हम बात करेंगे कि आपके दिमाग में परसेप्शन, मेमोरी, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है। फ्रॉम ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च टू रियल लाइफ एप्लीकेशंस, लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड आवर थॉट्स। आसान लफ्जों में कॉग्निटिव का मतलब है मेंटल प्रोसेसेस ऑफ द माइंड। सो द वे यू थिंक, लर्न एंड इंटरप्रेट सर्टेन थिंग्स अराउंड यू इज अ पार्ट ऑफ योर कॉग्निशन। ये तो हो गया कॉग्निशन। अब परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन इज सिंपली the way in which you interpret the things happening around you. The way we perceive information is just as unique as our fingerprints. आप जिस तरह से किसी सिचुएशन को देख रहे हैं, it is quite possible कि अगर कोई दूसरा इंसान आपके साथ ही उसी सिचुएशन में हो, तो वो उस सिचुएशन को differently interpret, feel और process करेंगे. In psychology, visual illusions are famously used to understand and explain perception. अगर आपको एक तस्वीर दिखाई जाए जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हों, लेकिन पहली दफा देखने पर आपको एक ही ऑब्जेक्ट नजर आएगा. For example, this famous figure ground illusion. When you look at this illustration, what do you see? A vase or the outline of two faces? At any moment, you will be able to see either the white vase or the outlines of the faces. जब perception की बात होती है, तो the concept of attention also comes into play. कभी सोचा है आप कितनी attention किस information को दे रहे हैं और क्यों? आइए एक गेम खेलते हैं. This challenge might seem simple, but trust me, it's harder than you think. मैं आपको स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट दिखाऊंगी. आपने करना ये है कि उस टेक्स्ट के कलर को बोलना है, लेकिन जो टेक्स्ट में लिखा है वो नहीं बोलना. Sounds easy, right? Let's try it. Say out loud the color of the text, not the text written. Now let's try something trickier. Again, say out loud the color of the text, not the text written. How did you do? Did your brain trip up? Let me know in the comments below. This is called the Stroop effect. It happens because reading is so automatic for us that our brain struggles to focus only on the color. So when I asked you to say the color of the text instead of the text itself, your brain went into an override automatic reading mode. Instead of doing the complex task of saying out loud the color of the text, you ended up reading the text. क्या आपको पता है आपकी short term memory is limited to only remembering 5 to 9 items? एक researcher थे जिनका नाम जॉर्ज मिलर था. He found that our memory capacity is very limited. मिलर ने चंकिंग की टेक्निक डिस्कवर की थी. मतलब ये कि आपका जो मोबाइल नंबर है या आईडी कार्ड नंबर है, आपको जल्दी याद इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके चंक्स बने होते हैं. मिलर का कहना था कि अगर चीजों को याद करने के लिए उनके चंक्स बना दिए जाएं, तब you are more likely to retain that information and things become easier to remember. So the next time you find it difficult to remember something, try grouping a few things together into chunks. Here's a quick task for you. You have 10 seconds. Try memorizing 385072461 and notice how long it takes. Can you try recalling the numbers now? और अब ट्राई करें इस चंक को याद करने की. 385072461. Did you notice the difference in being able to remember these numbers? You will be able to recall the digits divided into chunks more easily. During the 1970s, cognitive psychology में बहुत से experiments start हो चुके थे. Elizabeth Loftus started working on memory and eyewitness testimony as to how unreliable it can be. इनका कहना था कि आपकी memory fixed recordings की तरह नहीं होती. It can be distorted, changed or even implanted over time. इनसे पहले सब researchers को लगता था कि हमारी memory एक video recording की तरह होती है, जब चाहे पुराने इवेंट्स को एक्यूरेटली याद और रिकॉल कर सकते हैं. लेकिन लॉफ्टस ने अपनी द फेमस कार क्रैश एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया कि हमारी मेमोरी, सजेशंस, इमोशंस और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की वजह से चेंज हो सकती है. इन दिस एक्सपेरिमेंट लॉफ्टस शोड पार्टिसिपेंट्स वीडियोस ऑफ कार एक्सीडेंट्स एंड देन आस्क्ड देम लीडिंग क्वेश्चन अबाउट व्हाट दे सॉ. वन ग्रुप वाज आस्क्ड हाउ फास्ट वर द कार्स गोइंग व्हेन दे स्मैश्ड इनटू ईच अदर एंड द अदर ग्रुप वाज आस्क्ड हाउ फास्ट वर द कार्स गोइंग व्हेन दे
hit each other. सुनने में दोनों सवाल एक जैसे लगते हैं ना, but the results proved that the participants who heard the word smash estimated higher speeds than those who heard hit. And after 1 week, both groups of participants were asked if they saw broken glass in the video without showing them the video again. And the group who were told that the cars were smashed into each other were more likely to falsely remember seeing broken glass as well, even if there was none in the video. अब बात कर लेते हैं आपकी decision making की. Have you ever made a decision that just felt right only to realize later it wasn't the smartest choice? Don't worry, you're not alone. Your brain is wired to take shortcuts, and sometimes these shortcuts lead to cognitive biases. Let's test this out. सोचें आपको दो options दी जाएं. एक option जिसमें you have a 100% chance to win 5 lakh rupees, and then option B जिसमें you can win 50% of 10 lakh and lose 50%. Which one would you pick? Pause the video and comment below. Here's where it gets interesting. Losing feels way worse than the happiness of winning 50%. हमारा दिमाग हार जाने से डरता है. In psychological terms, we engage in loss aversion when it comes to thinking about risks. Let's try another one. Imagine a doctor tells you about a new surgery. Would you rather choose option A, where the doctor says this surgery has a 90% survival rate, and option B, where the doctor says this surgery has a 10% death rate? Both options mean the same thing, but most people feel safer with option A. That's called the framing effect, where the way a choice is presented to you changes how you feel about it. So if you're planning on convincing someone to do something, you now know what to do. हमारे दिमाग की सबसे खूबसूरत बात है कि इन एरर्स की वजह से हमारे डे टू डे एक्सपीरियंसेस शेप होते हैं. From what we buy to how we vote and even how we handle money. Marketers, businesses and politicians use these tricks all the time to influence us. Cognitive psychology has come a long way. Today, thanks to technological advancements, we're learning more about the mind than ever before. Scientists can now see which areas of the brain light up when you're making a decision, solving a problem, or even daydreaming. Human mind is more complex than we can ever imagine. मुझे तो psychology बहुत पसंद है, and we are very excited to navigate the psych way with you, but one step at a time. और आज के लिए इतना ही. Thank you for watching and giving such wonderful feedback on our first video. If you liked today's video, don't forget to click on the subscribe button and follow for more. This is Anusha with signing off.